Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel Swedeep Academy. As you all know, we are currently discussing resources and development, the first chapter of class 10th geography. In our previous session, we covered several important topics like resource planning in India, importance of resource conservation, and also sustainable. The most important topic was sustainable development. Okay, and in today's session we will take this decision forward, and also we cover the most important topic, that is land resources. So let's start this session. First thing we will discuss here, what is the importance of land resources. You know that we live on land, we perform our economic activities on land, we use it in a variety of way, in different way, and thus you know that land is a natural resources of utmost importance. Land resources kahinki ete adhika importance, you know that we live on land, we perform different type of economic activities. Not only that, बहुत other ways रे भी हमें land को use करूँ. Some example, it support natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system. ए point को ही अधिका explain करा जाएगी. Okay. So that is the importance of land resources. But you know that land is an asset of a finite magnitude. What do you mean by that? Finite magnitude, it means that land is a resource which quantity is limited. Land is an asset of finite magnitude, it means the resource quantity limited, and therefore it is important to use the available land for various purposes in a very careful way, in a very judicious way. आमे जनरली कंसीडर करू जे लैंड होची गोटे नेचुरल रिसोर्सेस जोटा कि एब्युडेंटली अवेलेबल, एंड आमे ताको जनरली सेते केयरफुली यूज करू ना. बट कह जाउची कोन, इफ यू टॉक अबाउट द लैंड रिसोर्सेस, इट्स क्वांटिटी इज आल्सो लिमिटेड, इट इज फाइनाइट इन इट्स मैग्नीट्यूड. आर क्वांटिटी कोन ना लिमिटेड, एंड जेहेतु आर क्वांटिटी लिमिटेड, a resource could be, land resource could be like the other resources, we have to use it purposefully, we have to use it very judiciously. Okay, if you talk about the India, then if you talk about the land resources of India, then the whole land of India can be categorized into different groups on the basis of its relief feature. भारत रे जहाँ भी हमें लैंड रिसोर्सेस पाउचे तार रिलीफ फीचर्स को जो हमें कंसीडर करिबा, देन डिफरेंट कैटेगरी डिवाइड करि परिबा, एंड ब्रॉडली इट कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर थ्री हियर, दैट इज माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. एंड आउट ऑफ 100%, 43% इज प्लेन, एंड अराउंड 27% इज प्लेटू, एंड अराउंड 30% इज ना माउंटेन. प्लेन, यू नो दैट प्लेन हमें कोई एरिया देखिया पाउचे, इंडो गैंगेटिक plain. Also we are getting in western coastal plain and in eastern coastal plain. Gangetic plain, that is UP, हमर जो उत्तर भारत रे जो देखा जाए plain region जहाँ को हमें कहूचे, you know that is Gangetic plain, जोटा कि रिवर गंगा द्वारा फॉर्मेशन होइची, ब्रह्मपुत्र plain. Okay, then third one is Indus plain. So mostly इंडिया रे जदि प्लेन कथा कहबा, देन गांगेटिक प्लेन को ही बिलोंग्स करे, ब्रह्मपुत्र प्लेन एंड इंडस प्लेन रो बहुत फ्यू रीजन इंडिया को बिलोंग्स करे. ओके, से रीजन को बिलोंग्स करे, एंड इन इंडिया अराउंड आउट ऑफ द टोटल लैंड रिसोर्सेस 43% हम पाखरे अछि कोन ना, दैट इज प्लेन. एंड आल्सो हमें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मींस हमारा पेनिनसुलर प्लेटू ईस्टर्न पार्ट, यू नो दैट सपोज this is not a perfect, but India, this is the eastern part, eastern coastal plain area, this is the western coastal plain area.
ओके ए रीजन रे भी हम किछि किछि प्लेन देखिया को पाउचे एंड these are formed by the river deposits okay and these are flat and fertile in nature. And what is the importance of plain? You know that because of its flat land and fertile in nature, this land is ideal for agriculture, human settlement, transportation, industry and etc. It means human activities and economic activities ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା mountain, plains and plateaus ଭିତରୁ को relief feature ଟି ଅଧିକା suitable then that is plain and that's why this relief feature is very densely populated. You have to remember that. Okay, 2 mark question आस्ते ही पारे. Next one is mountain. Mountain that is around 30%. Region Himalayas, Western Ghat, Eastern Ghat. Many other regions are also there, but mostly যদি আমি কইবা Western Ghat, okay, Eastern Ghat, a region রে পাই যাবা. Then in this region you will get what na Himalayas. So these are the mountain region around 30%. And its feature rock terrain, high altitude. Okay, most of the rivers are originated from the mountains. And what is the importance of mountain? Now it act as a natural barrier and influences monsoon. Climate chapter class 9th रे I think पढ़िथिबो कि Himalayas रो role कौन और strategic importance कौन. And with that if we talk about the Eastern Ghat and Western Ghat and also the Himalayas and also the other mountains जहाँ भी हम इंडिया देखने को पाऊचे से सब रो रोल से इंडिया रो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड को केमती इन्फ्लुएंस करे केमती डायरेक्ट करे डिफरेंट डायरेक्शन रे एंड दैट्स व्हाई हमें डिफरेंट रीजन रे रेनफॉल हमें कौन पाऊ ना अलग अलग पाऊ स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ना रेनफॉल बहुत डिफर करे डिस्कस करी से क्लास 9th रे एंड दैट इज द इंपोर्टेंस ऑफ व्हाट ना माउंटेन क्लाइमेट को बहुत अफेक्ट करे ओके and also बहुत कुछ रिवर भी ओरिजिनेट होता है and it also supports our biodiversity. That is the importance of our mountains. Last one is plateaus. Plateaus, you know that this region is called Deccan Plateau, Peninsular Plateau, and with that some central highland region, Chotnagpur Plateau. This all are belongs to plateaus around 27%. And what is the importance of it? Now this region or this relief feature is rich in different type of mineral resources. That's why mining बहुत हुए plateaus area रो बहुत natural resources हमको मिले and with that forest and agriculture भी somehow हमें देखने को plateaus रे okay and its feature elevated flatland and rich in mineral. This is very, very important, rich in mineral. So this is all about the relief feature of India. So India has land under a variety of relief features. Okay, बहुत कुछ relief features अच्छी, but broadly जब हमें categorize करीबा, then we can categorize it into 3 category, that is plateaus, mountains and plain. Okay, and plain around 43%, plateaus 27% and mountain 30%. You have to remember को region को belongs करे, features कौन and तारा importance is very, very important. Okay, so this is all about the relief features of India. Next, if we talk about the land resources of India, then we are using these resources for the following purposes. India रे जहाँ भी land resources हम पाखरे अच्छी, ताको हमें को भली use करूँ, okay, को purpose रे हमें use करूँ, से विषय discuss करीबा, okay. Some land resources belongs to forest. किसी land resources हमारा चले जाए कहाँ अंडर है ना forest अंडर है. And the land which is not available for cultivation, that can be categorized into 2 A and B, that is barren land or wasteland, or second that is land put to non-agricultural uses like building, roads, factories, etc. Again I am telling you part में discuss कौन करते ना India रे जहाँ भी land resources अच्छी से land resources को बा India रे जहाँ भी हम पाखरे land अच्छी से land को purpose रे हम use करते किसी land area रे हम देखिया पाऊचे forest ओके एंड किछि एवली लैंड अछि जहा कि कल्टीवेशन सेठे करा जाय नाही दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन द लैंड व्हिच इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन ताकू पुनी हमें 2 टाइप्स रे डिवाइड करि परिबा गोटे होछि एवली लैंड जो एरिया रे हमें बिल्डिंग रोड फैक्ट्रीज हमें सेटअप करछे ओके एंड दैट इज नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस एंड दैट लैंड इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन ये होछि गोटे सेक्शन सेकंड सेक्शन दैट इज
barren land and wasteland. This is very important. You should remember, you should know, okay, what do you mean by barren land and what do you mean by wasteland. So let's see. Here you can see the difference between barren land and wasteland. What do you mean by barren land? Now the land which is naturally unproductive. Naturally unproductive means the land which is naturally not suitable for agriculture. That is called barren land. And what do you mean by wasteland? Wasteland, this is not naturally unproductive. ये naturally unproductive नुह. ये naturally productive. इथिरे चाष करा जाई परिबो. किंतु because of some reasons ए land टी कौन है इची ना degraded है इची and वर्तमान आको हमें productive purpose रे use करू ना हो. ताको हमें कहिबा wasteland. So barren land means which is naturally unproductive. Wasteland means the land which is potentially restorable, which is productive, but now because of some reason that is completely degraded, that is completely not suitable for the cultivation, that is called as wasteland. Okay, example, as you can see, desert, rocky terrain, these lands are naturally unproductive. A land naturally ही माने प्राकृतिक प्रकृति ही कोई भली सृष्टि करिछि ए लैंड रे हमें कोनोसी चाष बा कल्टीवेशन करि परिबा नाही, प्रोडक्टिव यूज रे आसीबो नाही. But if you talk about the wasteland, जेमते हमें कहि परिबा because of the deforestation or because of some other reason, जेमते हमें डिस्कस करिबा चंबल बेसिन रे हमर देखा जाय कोन ना ए भली किछ लैंड देखा जाय जो लैंड को हमें यूज करि परिबा नाही. ओके, तो ए भली बहुत रीजन अछि इंडिया रे, केवल चंबल बेसिन नो बहुत ए भली लैंड अछि जो लैंड गुडी को हमर ह्यूमन मिसयूज पई, ओके, हम ताको प्रॉपर्ली जे तो यूज करने बा अदर किछ रीजन जोगो तार क्वालिटी कोन हिची ना डिग्रेडेड हिची, दैट इज नेचुरली सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर. ताको रेस्टोर करा जाय पारिबो, से दक्षता ता पाखरे से लैंड पाखरे से पोटेंशियलिटी अछि जे सेटा हमें चाष करि पारिबा, बट बिकॉज़ ऑफ सम रीजंस, ओके, नाउ सेथरे हमें चाष करि पारु ना, जा को हमें कहिबा वेस्टलैंड. Okay, so wasteland it is temporarily unproductive and this is permanently unproductive. And barren land it cannot be restored. देखो cannot be कही होनी किसी पिला जुक्ति करी पारंती जे वर्तमान हमें बहुत modern scientific method use करिया हमें desert रे भी हमें cultivation करिया start करेनी. But जब हमें comparatively कहिबा then we can say barren land that cannot be restored and wasteland can often be restored. Okay, आप हमें restore करी पारिबा using modern techniques. Sand dunes and rocky hills example, and here abandoned farmland and organized land. These are the example of wasteland. So this is all about what? Now barren land and wasteland. So बुझी पाते हो barren land and wasteland. Next, fallow land. Okay, किछि land resources जहाँ की fallow lands under आसे. Okay, fallow land means what? Okay, हमें तीन टा category divide करिबा fallow land को. That is the land which is left without cultivation for 1 or less than 1 agricultural year. Okay, 1 year. Suppose ताको नहीं जो हमें 5 year. गोटे land जदि 1 year to कम वर्षे रु कम दिन हला कोनोसी भी रीजन जोगु जदि चाष करा जाय नाही एंड ताको से भली छाड़ी दे जाय छि left uncultivated, then we can say that is current fallow. Left without cultivation for 1 or less than 1 agricultural year. ए भली काहे छडा जाय ना बेले बेले हम देखिबा लैंड को हमें कल्टिवेट न करी गोटे वर्ष पर्यंत छाड़ी दो काहे कि ना नेचुरली तार फर्टिलिटी से कोन करि परिबो अगेन क्रिएट करि परिबो. नेचुरली गोटे लैंड फर्टाइल हे परिबो, सेति पे हमें बेले बेले गोटे गोटे लैंड को 1 ईयर पर्यंत हमें सेमिति छाड़ी दो चाष न करी कल्टिवेशन न करी, तो ताको हमें कंसीडर करबा दैट इज करेंट फेलो. And what do you mean by other than current fallow? If a land is uncultivated, if a land uncultivated for the last 1 to 5 agricultural year, गोटे रु 5 वर्ष पर्यंत ए भितरे जदि कोनोसी भी कारण बसत गोटे लैंड को चाष करा जाओ नाही left uncultivated, then we can say that is belongs to other than current fallow. And if a land left uncultivated for more than 5 years, then we can say that is culturable wasteland. That is called as what? Now culturable. That is called as culturable wasteland. इटा में जो पढ़िले wasteland and culturable wasteland both are same. Okay, इटा में जो पढ़िले wasteland and culturable wasteland both are same. Okay, so culturable wasteland means left uncultivated for more than 5 agricultural years.
एंड नेक्स्ट वन इज परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड. यू नो दैट जो लैंड को आम ग्रेजिंग पे यूज करू. ओके गोचर भूमि जहाँ को कह जाए आम ग्रेजिंग लैंड कहि परिबा. परमानेंट पैस्चर जो लैंड आम यूज करू फॉर द प्रोड्यूसिंग पैस्चर और फॉडर ताको आम कहि परिबा परमानेंट पैस्चर्स. ओके लैंड अंडर मिसेलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया. ओके आम ये बुझी परिबा जेतबे आम नेट सोन एरिया एंड ग्रोस क्रॉप एरिया में पढ़िबा ऑटोमेटिक पॉइंट पी टी तमे बुझी परिबो. सो now let's see net sown area and gross crop area. What do you mean by net sown area and what do you mean by gross crop area? So let's try to understand. पिलांगरो बहुत confusion रुहे but बहुत easy. Okay, so let's see definition. What do you mean by net sown area? Now total land sown at least once in a year. Total land sown at least once in a year. Example कौन कहा जाउची? That is 10 hectare land used to grow crops, that is 10 hectare is NSA. Suppose country A रे suppose हम example नेबा country A रे total land केते अछि ना 10 hectare land अछि. जो 10 hectare land रे हमें कोन करछे at least वर्ष को थरे अंतत हमें से 10 hectare land रे कोन करछे ना चाष करिछे. तो हम पाखरे थिबा total land रो जेतिकी एरिया रे गोटे वर्ष रे at least हमें थरे कोन करछे ना कल्टिवेशन करछे चाष करछे. दैट इज द नेट सोन एरिया. ओके टोटल लैंड सोन एट लीस्ट वंस इन ईयर. सपोज धन्य कंट्री ए रे मैं अनदर एग्जांपल कहूची. सपोज कंट्री ए रे हम पाखरे अछि 20 हेक्टर लैंड. ओके सपोज हम पाखरे अछि 20 हेक्टर लैंड बट 20 हेक्टर लैंड रो सपोज गोटे वर्ष हमें केवल 10 हेक्टर लैंड रे कोन कले ना चाष कले. इट मींस तार नेट सोन एरिया हेला केते ना दैट इज 10 हेक्टर. कहीं हमें 10 हेक्टर लैंड को यूज करते फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स. दैट इज द नेट सोन एरिया. एंड व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोस क्रॉप एरिया? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोस क्रॉप एरिया? ना टोटल लैंड सोन मल्टीपल टाइम्स इफ पॉसिबल इन ए ईयर. ओके हमें एग्जांपल नंबर सेम कंट्री. सपोज धन्य दिस इज सपोज धन्य 2024. ओके 2024 रे हम पाखरे थिला कंट्री ए रे 20 हेक्टर लैंड एंड आउट ऑफ 20 हेक्टर लैंड आमे गोटे वर्ष रे 10 हेक्टर लैंड रे आमे थरे कोन करछे ना क्रॉप ग्रो करछे. इट मींस हे वाला कंट्री ए रो 2024 रे नेट सोन एरिया हे वाला केते ना 10 हेक्टर. 2025 आमे एग्जांपल नबा. सपोज 2025 रे आउट ऑफ 20 हेक्टर लैंड इन कंट्री ए आमे कौन कले 10 हेक्टर लैंड रे आमे थरे प्रोडक्शन कले थरे आमे कल्टिवेशन कले एंड अगेन ओके गोटे क्रॉपिंग सीजन सपोज धन्य खरीफ रे आमे खरीफ रे 10 हेक्टर लैंड रे आमे कौन कले ना प्रोडक्शन कले. अगेन रबी रे पुणी थरे आउ 10 हेक्टर लैंड रे कौन कले ना आमे प्रोडक्शन कले. इट मींस पर्टिकुलर ईयर 2025 रे टोटल आमे केते एरिया रे चाष करछे 10 हेक्टर लैंड दैट इज इन खरीफ एंड 10 हेक्टर लैंड दैट इज इन रबी. टोटल आमे गोटे वर्ष रे 20 हेक्टर लैंड आमे कोन करछे ना प्रोडक्शन करछे. देखो हम पाखरे जो थिला 20 हेक्टर लैंड रो से 20 हेक्टर लैंड रो आमे 10 हेक्टर लैंड रे आमे प्रोडक्शन करछे इन खरीफ एंड 10 हेक्टर लैंड आमे प्रोडक्शन करछे इन रबी एंड टोटल इट हे जाउची ग्रोस क्रॉप एरिया केते ना दैट इज द 20 हेक्टर. सो जदी एग्जांपल रे कंफ्यूजन होची आमे अनदर एग्जांपल नेबा. सपोज धन्य मोर क्वेश्चन पचारछि. ओके क्वेश्चन थ्रू हम बुझिया पे ट्राई करबा. सपोज धन्य 2025 रे खरीफ सीजन रे आमे प्रोडक्शन कले 20 हेक्टर लैंड रे एंड आमे रबी सीजन रे प्रोडक्शन कले 10 हेक्टर लैंड रे. ओके देन वर्तमान ग्रोस क्रॉप एरिया केते आसीबो आमे टोटल लैंड सोन मल्टीपल टाइम खरीफ रे आमे 20 हेक्टर रे एंड रबी रे आमे 10 हेक्टर रे. जदि पॉसिबल हला रबी रे पॉसिबल हला आमे 10 हेक्टर लैंड भी आमे कोन कले ना प्रोडक्शन कले. वर्तमान ग्रोस क्रॉप एरिया 2025 रे कंट्री ए रे केते हिजो दैट इज द 30 हेक्टर. आमे टोटल 30 हेक्टर लैंड रे डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन को मिसे कि आमे टोटल 30 हेक्टर लैंड रे आमे कोन करछे ना ग्रो क्रॉप्स ग्रो करिछे. दैट इज द
ग्रोस क्रॉप एरिया जने कहबो ना सर खरीफ रबी जेड रे हमें 5 हेक्टर लैंड रे हमें सपोज कले देन कोन हे जो ना +5 35 हे जो 35 हेक्टर हेला हम ग्रोस क्रॉप एरिया बट एठी नेट सोन एरिया केते हबो एटा में नेट सोन एरिया कोन हबो नेट सोन एरिया मींस हम एठे देखिबा सबटू हाईएस्ट ओके सबटू हाईएस्ट बा हम एमति कहि परिबा एटलीस्ट वंस हमें केते ग्रो करछे केते एरिया रे एटलीस्ट हमें थरे क्रॉप ग्रो करछे ना सबटू अधिका जदि हम देखिबा 20 हेक्टर एटलीस्ट थरे हमें खरीफ रे दैट इज 20 हेक्टर लैंड रे हमें क्रॉप ग्रो करछे दैट इज एनएसए मींस इट इज एनएसए केते ना 20 हेक्टर सो एनएसए 20 हेक्टर एंड ग्रोस क्रॉप एरिया दैट इज द 30 हेक्टर सो नेट सन एरिया जेतले हमें कैलकुलेट करछे हमें केवल कंसीडर करबा गोटे ईयर रे क्रॉपिंग सीजन देखिबानी रबी खरीफ और जैद हमें देखिबानी गोटे टोटल ईयर रे हम पाखरे जेतिकी भी टोटल लैंड अछि से लैंड भितरु केते एरिया रे हमें एटलीस्ट वंस एटलीस्ट ओके अंततः थरे हमें चाष करछे हम पाखरे थिला 20 हेक्टर एंड एटलीस्ट हमें से पूरा टोटल 20 हेक्टर लैंड हमें वर्ष को थरे अंततः कर दीजे दैट इज खरीफ रे हमें 20 हेक्टर लैंड हमें चाष कर दीजे दैट इज द नेट सोन एरिया टोटल लैंड सोन एटलीस्ट वंस इन ईयर एंड व्हाट इज द ग्रोस क्रॉप एरिया ना टोटल लैंड सोन मल्टीपल टाइम्स इफ पॉसिबल जदि लैंड रे पॉसिबल हैला मल्टीपल टाइम हमें डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन हमें कल्टीवेट करि पारिले ताले खरीफ रे केते रबी रे केते जैद रे केते बा ए तीनटा सीजन को छाडी की भी जदि किछि पॉसिबल हे पारला कोनोसी शॉर्ट सीजन रे आ किछि तमे प्रोडक्शन करि पारला तो टोटली केते एरिया रे हमें कल्टीवेट करिचे दैट इज द ग्रोस क्रॉप area that is the difference between net sown area and gross crop area you should know the concept but exam re ete details asiboni question asibo what do you mean by net sown area total land sown at least once in a year what do you mean by gross crop area total land sown multiple times if applicable okay evoli example de question pachari pare but last years manangre mu kai semti question kebe dekhini okay so in net sown area each area is counted once only but in gross crop area same land is counted each time a crop is sown different cropping season रे जदि हमें same land को बारंबार हमें crop पे यूज करते ताले से land को multiple time count करा जिवो it includes base agricultural area total गोटे country रे जति की land अछि से land रो खास करी केते एरिया रे हमें एग्रीकल्चर पॉसिबल गोटे ईयर रे हमें एग्रीकल्चर गोटे लैंड रे करि पारिले सो बेस एग्रीकल्चर एरिया होछि हमरो नेट सोन एरिया but all crops grown throughout the year गोटे ईयर रे throughout the year total केते एरिया रे हमें crops grow करि पारिछे that is the gross crop area okay multiple cropping not reflected here but in gross crop area multiple cropping that is completely reflected okay and these are not that much important okay so this is all about the net sown area and gross crop area okay so I think बुझी परथिबो ए पार्ट में कोन डिस्कस कले जे इंडिया रे जहां भी लैंड रिसोर्सेस अछि how we are using from the different point of view or from the different purposes for the different purposes हमें केमति लैंड को different purposes पे हमें यूज करूचे okay most important one is barren land wasteland cultivable wasteland gross crop area and net sown area you have to remember all these things okay that is important from the exam point of view if you look at the land use pattern in India as you can see here land use pattern okay ये पूरा डिटेल्स दिया जाइछि हमें पूर्वरु देखिले ए पार्ट में डिस्कस करथिले कोन ना हमर रिलीफ फीचर्स को हमें ब्रॉडली कैटेगराइज करथिले माउंटेन प्लेट्यूस एंड प्लेन बट ए पार्ट में पूरा इन डेप्थ जाई कि पूरा डिटेल डिस्कस कराई छी forest 18% during the period of 1960-61 and barren and uncultivable wasteland 18.11% and 1960s to 2014 को जतबेला हमें आसुचे forest cover increase हेची from 18.11% to 23.3% and barren and uncultivable wasteland reduce hechi from 18.11 to 5.5% and if we talk about area under non agricultural use during 1960-61 4.95 and now it is 8.7%. The most important one is net sown area now it is 45.5% and during that period 46.26%. Okay हम पाखरे जेतिकी टोटल लैंड अछि से लैंड रो 45.5% रे आमे गोटे वर्ष आमे सेथे कोन करि पाउचे एटलीस्ट आमे थरे कोन करि पाउचे ना चाष करि पारुचे पडले ना जस्ट डिस्कस करले आमे नेट सोन एरिया
So just like that, no need to remember all these facts. ए facts को मन रखिया किछ आवश्यक नहीं. जदि एग्जाम रे आसे ए टेबल देइथिबो ता सहित क्वेश्चन आसीबो, किंतु ए सब फैक्ट्स मन रखिया घोषिया किछि भी आवश्यक नहीं. एंड ए पार्ट जदि मु कहबी सेमति 3 मार्क 5 मार्क क्वेश्चंस किछि भी आसी परिबोनी. केवल मु इंपोर्टेंट पॉइंट्स बा इंपोर्टेंट कांसेप्ट्स को मु एठे नोट कर देछि जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे इंपोर्टेंट, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड that also. So let's see, the use of land is determined both by physical factor and also the human factor. This is very very important. आमे गोटे land को केमिति यूज करिवा, तारा यूजेबिलिटी, तारा यूज कहाँ पर डिपेंड करे ना, ये डिपेंड करे ह्यूमन फैक्टर एंड फिजिकल फैक्टर. कौन फिजिकल फैक्टर मीन्स ना से लैंड रो टोपोग्राफी कौन, भूपृष्ठर रूप भूमि रूप कौन, ओके से गोटे डेजर्ट ना से प्लेन ना माउंटेन ना प्लेटू. सो गोटे भूमि रूप को क्लाइमेट रीजन को से बिलोंग्स करे, सॉइल टाइप कौन, ये सब होची फिजिकल फैक्टर. जेमते हमें प्लेन कथा जदी कहबा, नॉर्दर्न प्लेन कथा कहबा, नॉर्दर्न प्लेन रो क्लाइमेट बहुत बढ़िया, सॉइल जदी कहबा कंप्लीटली फर्टाइल, टोपोग्राफी प्लेन रीजन, सो ऑब्वियसली दैट इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एंड दैट्स व्हाई ए फिजिकल ए पॉजिटिव फिजिकल फैक्टर्स जोगु हमें प्लेन एरिया रे बहुत ओवर क्राउडेड रीजन गुडी को देखिबा को पाउचे. ओके जस्ट लाइक दैट ह्यूमन फैक्टर जदी कहबा, गोटे लैंड रे पॉपुलेशन डेंसिटी केते हाई, टेक्नोलॉजिकली कैपेबिलिटी केते हाई, एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशंस, ये होची सब ह्यूमन फैक्टर. ये भी अफेक्ट करे जे हम गोटे लैंड को केमिति यूज करू. ओके जदि हम जिबा मेट्रो सिटी जदि जिबा, मेट्रो सिटी मानन करे कोन ना पॉपुलेशन डेंसिटी वेरी हाई, टेक्नोलॉजिकली से रीजन गुडी को बहुत कोन एडवांस. दैट्स व्हाई जदि मेट्रो सिटी को जिबा, मेट्रो सिटी में बहुत ऑफिसेस पाउचे, आईटी सेंटर्स पाउचे. सो लैंड को हमें को पर्पस रे यूज करबे, ये कहा पर डिपेंड करे ना, फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स. ओके आई होप कि बुझी पारथिबो. क्वेश्चन आसी पारे, शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर टू डिफाइन द यूज ऑफ लैंड, ये क्वेश्चन है, और व्हिच इज नॉट डिटरमिन, व्हिच इज नॉट ए डिटरमिनेंट ऑफ यूज ऑफ लैंड, ये क्वेश्चन आसी पारे. टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 million square kilometer. Information you need to remember. The pattern of land use varies greatly from one state to another. Just पूर्व डिस्कस करी, पैटर्न ऑफ लैंड यूज ये कहाँ पे डिपेंड करे, पैटर्न ऑफ लैंड यूज डिपेंड करे फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर. एंड यू नो दैट वन स्टेट टू अनदर फिजिकल फैक्टर ह्यूमन फैक्टर्स कौन करे, वेरी करे. इफ यू गो टू द उत्तर प्रदेश you will get the plain area. If you go to the Madhya Pradesh, forest tract पाइबो, plateau region तमे देखियो पाइबो. तो जेतु स्टेट टू स्टेट फिजिकल फैक्टर ह्यूमन फैक्टर्स वेरी करे, and that is the reason because of which land use pattern also greatly vary from the one state to another. Some example, if you go to the Punjab and Haryana, you will get 80% एरिया, पंजाब एंड हरियाणा 80% रीजन तमे पाइबो कोन ना नेट जोन एरिया. हम एठे जस्ट पूर्व रे देखिले नेट जोन एरिया जो 45.5% ये टोटल इंडिया रो. जब मैं केवल पंजाब रे फाइंड आउट करिबा, देन पंजाब रो 80% एरिया होची कोन ना नेट जोन एरिया. बट इफ यू गो टू द अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, ओके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दैट इज लेस देन 10%. अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, ओके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कथा जदि कहबा, ओके हिमालयन रीजन को बिलोंग्स करे, एंड दैट इज ए कंप्लीटली माउंटेन रीजन, एंड दैट्स व्हाई सेठा में कोन पाइबानी ना नेट जोन एरिया पाइबानी, वेरी लेस, दैट इज 10%. सो एटा मु कहली एग्जांपल देली कार ना फिजिकल फैक्टर एग्जांपल देली. सो जेमति मु कहली स्टेट टू स्टेट फिजिकल फैक्टर ह्यूमन फैक्टर्स वेरीज अ लॉट, एंड दैट्स व्हाई लैंड यूज पैटर्न आल्सो वेरी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट greatly. Okay. Next, another information you should remember, that is forest area in the country is far lower than the desired 33% of the geographical area as it was outlined by the National Forest Policy 1952. According to the National Forest Policy 1952, कौनसी भी स्टेट বা कौनसी भी कंट्री रो टोटल जियोग्राफिकल एरिया रो 33% कोन हवा दरकार, फॉरेस्ट हवा दरकार. काहे कि ना फॉर द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस एंड इकोलॉजिकल maintenance of the ecological balances. Okay, environment point of view, ecological balance point of view, गोटे स्टेट बा गोटे कंट्री रो टोटल जियोग्राफिकल एरिया रो 33% कोन होबा दरकार, फॉरेस्ट होबा दरकार according to national forest policy. But you can see here in India during the period of 1960-61 it was just 18.11% and now that is 23.3%. It means forest policy defined करथिबा परसेंटेज रो कम आम पाखे कौन अच्छे ना फॉरेस्ट अच्छी. अगेन इट भेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, किसी स्टेट को जीव जमी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश फॉरेस्ट बहुत हाई पाइब, किंतु तुम नेट जोन एरिया बहुत अल्प पाइब. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट इज लैंड यूज पैटर्न इन
India. Now this part is very important. VVI, very important. Okay, exam point of view बहुत important. Okay, high priority concept मैं आपको कही परिवी. Land degradation and conservation measure. So first let's try to understand what do you mean by land degradation. What do you mean by land degradation? Land जतबेले degraded हुए, degraded means जतबेले quality. Land रो जतबेले quality रे deteriorate हुए, जतबेले land रो quality कौन हुए ना कमी जाए ताकू ही हमें कहूचे land degradation. Okay. And conservation measure, you know that land degradation को हमें केमती control करी परिबा, that we'll discuss in this part. Let's try to understand. We have shared our land with past generation and will have to do with the future generation too. Not only about the land resources, ताको हमें केवल land resources पाई applicable करिवानी, जहाँ भी हमें natural resources पाउचे, ए resources कुरिका हमें हम past generation too पाइचे, जेतो हमारा past generation ए रिसोर्सेस गुडी को बहुत केयरफुली यूज करछन्ते, दैट्स व्हाई आमो पई से रिसोर्सेस अछि एंड सेम स्ट्रेटजी बा सेम माइंडसेट आमको भी रखिवार अछि, रिसोर्सेस को बहुत केयरफुली यूज करिवार अछि जदि हम चाहू हमर फ्यूचर जनरेशन पई भी ए रिसोर्सेस कोन रो ना कंजर्व हे रहू. यू नो दैट 95% of the basic needs for food, shelter and clothing are obtained from the land. Okay, just पूर्वरु हमें जेमति पढ़ले importance of land resources, in that point you can write this also. आकु भी लिखि परिबो हमर basic need रो 95% केवल fulfill हुए through the land resources. That is the importance of land resources and that's why we need to use it in a proper way. Human activities have not only brought about a degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces. It means what? Land degraded hebar duity main reason अछि. One is human activities and second one is the natural activity. Natural activity, human activity both are responsible for the land degradation. But कहा जाउछि कोन human activities केवल एहानो जे लैंड को डिग्रेडेट करे, लैंड को डिग्रेडेट करिवा सहित नेचुरल एक्टिविटीज को भी आउरी एग्रेवेट करे जेमति अधिका कोन हबो ना लैंड डिग्रेडेड हबो. So that's why we need to conserve or that's why we need to use these resources in a careful way. Okay, again मु कहूची ह्यूमन एक्टिविटीज तो गोटे रीजन कहार ना लैंड डिग्रेड हेबार, ये केवल लैंड डिग्रेडेशन कराइनी, नेचुरल एक्टिविटीज जो भी जो लैंड डिग्रेडेड हुए ताको आउरी कोन करे प्रोत्साहन दिए, ताको आउरी एग्रेवेट करे एंड दैट्स व्हाई ह्यूमन एक्टिविटीज को हमको बहुत control करिवार अछि and we need to use the land resources in a careful way. As you can see, deforestation, mining, overgrazing, over irrigation, industry, okay, then faulty method of plugging, all these are the human activities which are responsible for the land degradation. And if you talk about the natural activities, flood, earthquake, volcano and landslide, these are the natural activities or causes to the land degradation. So let's see some example. Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying too have contributed significantly to the land degradation. किछि example हमें देखिबा. If you go to the Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha, okay, if you go to the Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha, जहाँ को कि हमें कहू छोटनागपुर प्लेटू रीजन, if you go to the छोटनागपुर प्लेटू रीजन or any other mining sites, कौन सी भी mining sites को तमें जीवा देखिबो एक्सकेवेशन हला परे माइनिंग हे सरला परे से जगह को से भली छाड़ी दिया जाए. ओके, खाल ढिप डीप स्कार्ट्स एंड ट्रासेस ओवरबर्डनिंग. ओके, सो से भली माइनिंग हे सरला परे से जगह को जेमी सेमती छाड़ दिया जिवो, जहा द्वारा कोन हबो ना डीप स्कार्ट्स एंड ट्रासेस रहि जिवो, खाल ढिप ही रहि जिवो, जो लैंड गुडी को आउ आमे कोनसी यूज करि परिबा नाही. जेमते हमें पूर्वरु पढिथिले, जस्ट पूर्वरु मु कहिथिले दैट इज वेस्टलैंड, आको हमें गोटे वेस्टलैंड कहि परिबा. ओके, लैंड माइनिंग साइट्स गुडी को किछि माइनिंग साइट्स ए भली अछि जोडा कि प्रोडक्टिव जो एरिया में चाष करि परथांदे, बट सेत्रा हमें माइनिंग कले, माइनिंग कर सला पर ताको सेमति ही छाड़ देले, खाला डिपो ही छाड़ देले, तो से लैंड हमें कोन करि परियो ना प्रोडक्टिव यूज हे परिबोनी, से वेस्टलैंड रे कन्वर्ट हे कला बिकॉज़ ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज. ओके, सो दिस इज द रीजन माइनिंग साइट्स को एरिया ना छोटनागपुर प्लेटू रीजन because of the mining आमे कहि परिबा लैंड कोन वे ना डिग्रेडेड वे, लैंड डिग्रेडेशन वे. सेकंड को जाउची इफ यू गो टू द झारखंड छत्तीसगढ़ सेम छोटनागपुर प्लेटू रीजन बिकॉज़ ऑफ द माइनिंग कोन होची ना डिफोरेस्टेशन होची. डिफोरेस्टेशन इज आल्सो लीड्स टू व्हाट ना लैंड डिग्रेडेशन. डिफोरेस्टेशन भी गोटे मेजर कॉज कारण ना लैंड डिग्रेडेशन रो. बट इफ यू गो टू गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग
ओके ओवर गेजिंग इज द रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन ओके आवश्यकता ठू अधिका जतबेले आमे लैंड को यूज करछे गोचर भूमि भाबे सेतबेले भी लैंड डिग्रेडेड हुए काहेकि ना से लैंड रे जो माने छोट छोट गछपत्र जहाँ थी जदि से सब आम बारंबार खाली गोचर भूमि भाव व्यवहार करके नष्ट करवा ताले यू नो दैट जितेबाला गोटे लैंड कौन गछपत्र न रुहे हेवी रेन हेबा द्वारा लैंड वाश अवे हुए ओके मृत्तिका क्षय हुए सॉइल एरोजन हुए दैट लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन सो ओवरग्रेजिंग इज आल्सो ए कॉज ऑफ व्हाट ना लैंड डिग्रेडेशन नेक्स्ट इफ यू गो टू द पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी ओवर इरिगेशन ओके नेक्स्ट इज द ओवर इरिगेशन इज responsible for what ना land degradation over irrigation केमती ना आवश्यकता ठू जदी अधिका आमे कोन करिबा ना पानी रे आमे जलसेचन करिबा जोगु कोन हबो वाटर लॉगिंग हबो एंड वाटर लॉगिंग हेबा द्वारा एदर salinity और alkalinity ऑफ द सॉइल कोन हबो ना इंप्रूव करी बढ़ी जीवो ये डिपेंड करे से सॉइल रे alkalinity ना salinity को मटेरियल रो माने क्वांटिटी अधिका अछि ता ऊपर डिपेंड करे जदी सॉइल रे salinity क्वांटिटी जदी अधिका थिबो सेही मटेरियल्स रो जदी क्वांटिटी अधिका थिबो ताले अधिका जलसेचन करिवा द्वारा ओवर इरिगेशन द्वारा सॉइल रे एदर salinity इंक्रीज करिवो और alkalinity इंक्रीज करिवो ओके सो ओवर इरिगेशन इज आल्सो जदी salinity बहुत अधिका हे जाय से लैंड रो फर्टिलिटी कंप्लीटली कमी जिवो ओके सो दैट्स व्हाई ओवर इरिगेशन इज आल्सो ए कॉज ऑफ व्हाट ना लैंड degradation next one is mining processing like grinding and limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere and it retards the process of infiltration of water into the soil after settle down on the land kon ko hochi mineral processing industry ओके जमती कह जाय लाइमस्टोन हो बा लाइमस्टोन जमती सीमेंट इंडस्ट्री पय यूज करा जाय सीमेंट इंडस्ट्री हो किबा सेरामिक इंडस्ट्री हो ए इंडस्ट्रीज मानकर कोन हुए ना मिनरल प्रोसेसिंग जोगु ह्यूज अमाउंट रो क्रिएट हुए कोन ना डस्ट एंड से डस्ट गुडी को ग्रेजुअली विथ टाइम सॉइल ऊपर कोन हे जाय ना सेटल डाउन हे जाय बसी जाय ओके एंड सॉइल ऊपर जते बेले गोटे फाइन डस्ट रो गोटे लेयर जते बेले गोटे बसी जाय आ द्वारा कोन हुए ना इनफिल्ट्रेशन हे पारे नाही इनफिल्ट्रेशन मींस वर्षा हेबा द्वारा से पानी भिजी की माटी भीतर को जाई पारे नाही जहा द्वारा कोन हुए ना लैंड रो फर्टिलिटी भी डिक्रीज करे विदाउट ग्राउंड वाटर क्वांटिटी बा ग्राउंड वाटर लेवल भी दिनो को दिन कोन हुए ना कमी बारे लागे तो हम एटे कहि परिबा डिफरेंट इंडस्ट्री आर आल्सो रेस्पोंसिबल फॉर व्हाट ना लैंड डिग्रेडेशन एंड यू नो दैट इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स ओके विदाउट ट्रीटिंग प्रॉपर्ली जते बेला हम इंडस्ट्री रो बाहरथुवा वर्ज्य वस्तु को जते बेला हम एठी सेटे पकोचे ओके आ द्वारा भी हमर कोन होय ना लैंड डिग्रेडेड हुए सो दिस ऑल आर द डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज व्हिच आर रेस्पोंसिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन वेरी इजी बहुत छोटो तमे पढी सब आसुचो दैट इज माइनिंग सेकंड वन इज डिफोरेस्टेशन थर्ड वन इज ओवरग्रेजिंग ओवर इरिगेशन ओके माइनिंग मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन और blah 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 then without treating when we are disposing industrial effluents here and there this all are the examples of what na human activities which are responsible for the land degradation how can we control it conservation method kon esu ko ame control kemti kari pariba na just opposite of deforestation afforestation okay just opposite of overgrazing management of grazing can help to some extent आमे ओवर ग्रेजिंग को आमे मैनेज करिवार अछि डिफोरेस्टेशन को आमे कन्वर्ट करिवार अछि कोथरे ना एफोरेस्टेशन रे then we have to do the planting of shelter beds of plants control on overgrazing stabilization of sand dunes by growing thorny bushes are some of the method to check the land degradation okay desert area रे हमको sand dunes को आमे you know that sand dunes हमें क्लास 9th रे पढ़थिले okay desert area रे तमे एभली देखियो पाउथो कोन ना वेव लाइक स्ट्रक्चर तमे देखिया पाओ तो सैंड जो फॉर्म हिते ताको सैंड ड्यून्स कहै छै ए सैंड ड्यून गुडी को कोन ना स्टेबल न थाए जोर से पवन ले गोटे एरिया चल जिवो अन्य एरिया रे कोन हे जिवे ना जमा हे जिवे तो सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करबा दरकार तो सैंड ड्यून को स्टेबलाइज करिया पे हमें कोन करू ना शेल्टर बेल्ट क्रिएट करू ओके हमें बुशेस को थ्रोनी बुशेस को ग्रो करू तो शेल्टर बेल्ट तयारी करिबा ओके बा शेल्टर बेल्ट आउ कोडी देखा जाय कोस्टल एरिया रे मध्य हमर सी ओशन जो देखा जाए कोस्टल एरिया रे जो सॉइल एरोजन हुए ताको कंट्रोल करिया पे लैंड डिग्रेडेड हुए ताको कंट्रोल करिया पे कोस्टल एरिया रे हमें शेल्टर बेल्ट हमें क्रिएट करू
डेजर्ट एरिया रे भी हमें शेल्टर वेल्स क्रिएट करो ओके ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करबा ए सब भी डिफरेंट मेथड बाय व्हिच वी कैन कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन देन मोस्ट इंपोर्टेंट वन इज प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड को प्रॉपर्ली मैनेज करबा जेमति माइनिंग एंड एक्सकेवेटिंग साइट्स को आफ्टर माइनिंग ताको प्रॉपर्ली ट्रीट करबा दरकार ओके माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करबा दरकार इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट अब तक हमें डिस्चार्ज करबा दरकार बा डिस्पोज करबा दरकार एंड वेस्ट को हमें प्रॉपर्ली ट्रीट करबा दरकार सो दिस आर द डिफरेंट वे बाय व्हिच वी कैन we can control land degradation. So this part is very important. Again I am telling you that is what do you mean by land degradation and what are the different way by which you can conserve the land resources. Okay, so land degradation को एही बोली तमे चार्ट यूज करि पारो एग्जाम रे ओके टू हेडिंग रे लिखिबो ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नेचुरल एक्टिविटीज बोथ आर रिस्पांसिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन एंड जतबेले लैंड डिग्रेडेशन को भी लिखुछ आकु भी डिफरेंट हेडिंग रे तमे लिखि पारो एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर ग्रेजिंग ओके क्रिएशन ऑफ शेल्टर बेल्ट प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड देन प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एही बोली साइड हेडिंग दे लिखिबो सो that will your answer will be attractive and chances is very high कि तुम्हारा मार्क बहुत हाई आसीबो ओके सो दिस इज ऑल अबाउट लैंड रिसोर्सेस आई होप कि बुझी पारथियो डेट इजी थिला बहुत ही इजी नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करबा सॉइल एज ए रिसोर्सेस ए सेशन टी हमर रहइबो लास्ट सेशन एंड हम कंप्लीट करबा रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट सो आई होप कि सेशन टी भल लागिथिबो ओके यदि भल लागिथि देन फ्रेंड्स मानक सहित शेयर करंतु ता सहित सब्सक्राइब भी करंतु लाइक भी करंतु सो थैंक यू फॉर वाचिंग अगेन नेक्स्ट वीडियो में पुनी थर देखाबा विथ सॉइल रिसोर्सेस थैंक यू वेरी मच